Welcome to Tech and Travel with NGT. Hello, welcome friends. Here we will discuss about magnetic vector potential, first law of magnetostatics and second law of magnetostatics. Okay, now from Biot-Savart law, what is Biot-Savart law? B equal to mu 0 4 pi volumetric integration JR cross r cap divided by r square dv dash. It is called Biot-Savart law. Okay, so actually what is Biot-Savart law? Mu 0 divided by 4 pi I dl r by r square. Okay, but IDL equal to what? J into dv. J into dv. So in this way we can write Biot-Savart law as equation number 1. We will place the value of r cap divided by r square. Okay, what is r cap divided by r square? Let me say r cap divided by r square equal to minus gradient of 1 upon r. How it is so? Gradient, I mean differentiation of 1 upon r equal to differentiation or gradient r raised to minus 1. But gradient itself a vector quantity. So multiplied by unit vector r cap. Okay. Now what is the differentiation of r raised to minus 1? Okay. Minus n is there. Okay. n minus 1. n minus 1. So it is minus 1 minus 2 here. N r caret or r cap here. So this will be equal to minus r cap by r square. Minus n will come here. Okay. So in this way, B equal to magnetic field equal to minus mu 0 divided by 4 pi volumetric integration J cross grade 1 upon r, equation number 2. Now value of J cross grade 1 upon r will be equal to B0 mu 0 divided by twice pi volumetric integration curl of J is a function of r prime. Okay, dv prime divided by r. How it is that? Now it is from this equation number B. How it is so? You can say curl of a delta cross or nebula cross. What is f? F is a scalar function and a is a vector quantity. A is a vector quantity equal to gradient of a f cross a plus curl of a scalar function f. Okay. So this one is a scalar function. Now 1 upon r it is called scalar function. Okay, a is a vector, j is a vector equal to again gradient of scalar function cross a equal to j plus curl of j 1 upon r. Okay, but you know that nebula is a function of r and j is a function of r prime. Okay, so curl of j will be equal to 0 here. Now you see here this equation a vector quantity, this also a vector quantity. A cross b equal to minus b cross a. We can write like this. Okay. So in this way this will be equal to, now place the value of j cross delta 1 upon r. Minus sign will be there. Okay. So minus sign will come here. So in this way we place the value of like this. Minus sign is here. J cross delta 1 upon r. ये वाली वैल्यू माइनस j ग्रेड 1 अपॉन r. j क्रॉस ग्रेड 1 अपॉन r. ये वाली वैल्यू है ना, ये इधर आ गई. ये इसको इधर माइनस कर दिया. ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और साइन क्या हो गई? माइनस हो गई. तो उसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको? डेल्टा क्रॉस 1 अपॉन r j मिल गई. तो ये वैल्यू हमने अंदर इंट्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं किया. ये वाली. Okay, so let me say B equal to curl of mu 0 divided by 4 pi. Okay, J is a function of r prime by r. Okay, dv dash, equation number 4. Now quantity in bracket it is called as a vector because vector B equal to curl of a vector. Now value of vector it is called as a vector A and vector A is called vector potential. So B equal to curl of A, itself a vector quantity. And A is called as a vector potential. So what is the value of vector potential? A equal to mu 0 divided by 4 pi volumetric integration J r prime divided by r dv. It is called magnetic vector potential. Okay, one of the important thing or value, physical value in magnetostatics. Okay, now
from this equation number 6, okay, we will derive the first law of magnetostatics. You know, again, starting from equation number 4, B equal to curl of A. This one is A. A is a vector potential. Now take the divergence of both sides. Take the divergence of both sides. Okay, so divergence of B, divergence of कर्ल ऑफ ए, ये है ना, ये वैल्यू ए है. ओके, ये डेल्टा इधर है, क्रॉस वाली साइन इधर है. टेक द बोथ साइड डाइवर्जेंस ऑफ बी, डेल्टा डॉट बी, अगेन डेल्टा डॉट कर्ल ऑफ ए. ओके, वेयर ए इक्वल टू म्यू 0 4 पाई वी एंड सो ऑन, जे आर डैश आर डी वी. ओके, ये जो इक्वेशन है ये हमने 6 लगाया है. ओके, बट what is divergence of a curl? From mathematics, divergence of a curl equal to 0. So divergence of B equal to 0. Divergence of B equal to 0. It is called first law of magnetostatics. Again, starting from equation number 4. यहाँ से हमने डाइवर्जेंस लिया अभी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स मिला. ओके, अभी उसका क्या लेंगे, हम कर्ल लेंगे. दोनों साइड में नेबुला क्रॉस और डेल्टा क्रॉस लेंगे. ओके, इस तरह से दोनों साइड में, तो हमको सेकंड लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स मिलेगा. कैसे, चलिए देखते हैं. क्लियर. नाउ अगेन टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 4 ऑन बोथ साइड. ओके, सो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू कर्ल ऑफ, इसका भी कर्ल लेंगे, यहां भी डेल्टा क्रॉस और भी आएगा. ओके, कर्ल ऑफ, ओके, क्रॉस म्यू 0 4 पाई वी जे आर डैश और जे आर प्राइम आर डी वी डैश. ओके, इक्वेशन नंबर 8. ओके, नाउ curl of B, what is the value of, let me say, curl of A. ये इक्वेशन क्या है, कर्ल ऑफ A. एक्चुअली इक्वेशन ये इस तरह का है, कर्ल ऑफ B इक्वल टू कर्ल ऑफ A. ये वाला इक्वेशन है. क्लियर, ये वाला इक्वेशन है, कर्ल ऑफ A. ओके, सो curl of A equal to, okay, you know that curl of A equal to gradient of divergence A minus Laplacian A. Curl of A equal to, okay, gradient of divergence of A, ये मैथमेटिकल है, और माइनस Laplacian of A, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ओके, ये वाली. ओके, ये A है, ये डेल्टा और कर्ल. ओके, अगेन ये कर्ल, ये भी A है, इसको भी हम A बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, A बोलेंगे. सो कर्ल ऑफ A इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस A माइनस लैप्लासियन ऑफ A. क्लियर. सो ये वैल्यू अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे. बट डाइवर्जेंस ऑफ A इक्वल टू 0. वाई? फॉर क्लोज लाइन फील्ड. ओके, डाइवर्जेंस ऑफ इक्वल टू 0. यू नो दैट magnetic field vectors having closed line loop. Suppose this one is a magnet. Okay, so this is north pole, this is south pole. It is like this. Okay, so magnetic lines are closed for divergence of B. Okay, let me say this one is a magnet. Okay, this one is north pole, this one is a south pole. Okay, so magnetic field line are closed line. For closed line, divergence of B equal to 0. Why it is so? Because input flux equal to output flux. Okay, जिसकी इनपुट फ्लक्स और आउटपुट फ्लक्स एक समान होती है, उसका डाइवर्जेंस क्या होता है, 0 है. इनपुट फ्लक्स इक्वल टू आउटपुट फ्लक्स. ओके, सो नो चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, जस्ट लाइक दैट. डाइवर्जेंस ऑफ B इक्वल टू 0. सिमिलरली A will be derived from B. ये A will be derived from B. So यही चीज ए के लिए मैग्नेटोस्टैटिक्स में लागू होती है. डाइवर्जेंस, सिमिलरली डाइवर्जेंस ऑफ ए ऑल्सो इक्वल टू 0. वी कैन से लाइक दिस. क्लियर. सो इन दिस वे डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू 0. सो कर्ल ऑफ बी इक्वल टू, ओके, दिस वन इज Laplacian. ओके, माइनस Laplacian इज अ फंक्शन ऑफ आर, म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन जे आर प्राइम, जे इज अ फंक्शन ऑफ आर प्राइम, नॉट आर, divided by r into dv dash, like this, equation 10. Now let me say Laplacian comes inside this. Okay, so let me write here curl of B equal to, okay, minus mu 0 divided by 4 pi.
Laplacian of 1 upon r dv dash. Okay, or let me write here what is the value. Here is a jr, here is a value jr or jr prime. Okay, clear? Okay, jr is here but Laplacian will come here. Okay, so jr. So let me write here Laplacian of 1 upon r equal to Laplacian of 1 upon r equal to, okay, minus 4 pi delta cube r minus r1. It is called Laplacian equation or direct delta function. Okay, so in this direct delta function we can say for r equal to r dash volumetric integral delta raised to cube equal to 1. So curl of b equal to minus mu 0 4 pi here j r dash. Okay, the value of this will be minus 4 pi del cube r minus r1 dv. But when r equal to r dash, okay, r equal to r dash, the value of del cube equal to 1 और इक्वल टू माइनस 4 पाई. इसके वैल्यू क्या मिलेंगी आपको हमको? ये इसकी वैल्यू लैप्लासियन ऑफ 1 अपॉन आर की, लैप्लासियन ऑफ 1 अपॉन आर की माइनस 4 पाई डेल क्यूब आर माइनस आर 1. सो डेल क्यूब इक्वल टू 1 मिलेगा हमको, ये वैल्यू हमको 1 मिलेगी. ओके, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस 4 पाई डेल क्यूब. ये वैल्यू हमें मल मिली, ये माइनस 4 पाई. और उसी समय क्या होगा? जे आर डैश विल बी कॉन्स्टेंट, integral sign will be disappear. So we can write here curl of b equal to minus mu 0 4 pi. jr तो है ही, इंटीग्रल साइन और डिफरेंशियल साइन क्या होगी? कैंसिल होगी. ओके, माइनस 4 पाई इधर मिलेगा. कहाँ से मिला हमको? ये वाला इक्वेशन से, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में से मिला हमको ये. ओके, ये this will be cancelled, minus minus plus. So curl of b equal to mu 0 jr dash, equation number 14. It is called second law of magnetostatics. Thank you.